All right. So full wave rectifier we are going to see, and as we know, rectifier का purpose क्या है? To convert AC into DC. Now, full wave rectifier में क्या होगा? We have the two diodes, one here, one here. One is connected to point A, another is connected to point B, and transformer also. It is different type of transformer in which secondary winding is done in two parts. यहाँ तक एक है और फिर एक दूसरी है इधर सेंटर से टैपिंग की है उसकी, एक वाइंडिंग अप टू हियर है and another is here. Center is commonly connected here, earthed here, and other part is connected to the load resistance at and Y. Now output diodes are, both the diodes outputs are connected, negative are connected together, and they are connected to the other end of the load resistance RL. Okay. So what is different here? Two diodes and center tap transformer. Okay. So now what happens? These two ends, A and B, these 2 points, will be having the supply out of phase by 180 degree. When positive half is here, the negative half will be here. When negative half is here, positive half will be here. So one of the diodes will always have positive half and hence will conduct. या तो ये पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी ये इधर से with respect to center of the that secondary coil. यहाँ से कनेक्ट, यहाँ से सप्लाई सर्किट कंप्लीट हो जाएगा ऐसे. and when this is negative, ये पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ से सप्लाई ऐसे कंप्लीट हो जाएगी. It will come here. तो यहाँ से, so for both the halves, output will be obtained. Okay. And therefore it is full wave rectifier. Okay. So let's see. Diagram must be clear. Diagram clear है. देखो अभी ये दोनों point waveform at A is when it is like this. So waveform at B is having opposite. So both A and B are receiving the supply because of center tap here. They are receiving the supply out of phase by 180 degree. Okay. So both the pulse you can see are out of phase. जब ये plus है तो ये minus है, ये minus है तो ये plus है, and so on. So when this is plus, the diode D1 will be conducting. We get the output from diode D1. This pulse is received due to diode D1 because it is in forward bias. यहाँ से resistance will be less and it will get the supply will pass. And second case में when negative half is at A, then that you can see positive half is at B. Now B will be at forward bias. यहाँ से supply आगे चली जाएगी. So this will be due to that point B where D2 is connected. तो D2 से मिलेगी. फिर यहाँ पे D1 से ये पॉजिटिव है देखिए. फिर यहाँ पे ये पॉजिटिव है D2 से मिलेगी. That's how we get the supply from both the diodes. I mean supply for both the halves. Positive negative दोनों से. यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, उस समय ये पॉजिटिव हो गया. यहाँ से यहाँ तक देखो one wave is completed, but हमें दोनों से हमें आउटपुट मिला. दोनों से हमें one wave से 2 पल्सेस मिली. ठीक है. Alright. तो this is the output which is again pulsating. ये constant नहीं है यहाँ पर pulsating, but इसका ये जो टाइम है
it is reduced in this time interval. It is repeating again now. The time interval is reduced to half. इसका टाइम इंटरवल इतना है, साइकिल रिपीट होने का, तो यहाँ से रिपीट हो रही, इसमें यहीं से रिपीट हो रही, तो टाइम इंटरवल हाफ हो गया, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज twice the frequency of input. Are you getting these points? ये diagram में everything is there. I will explain you in diagram. That's what you are supposed to write. Make the correct diagrams which are self-explanatory. Other points you can write your own. तो ये जो मैंने explain किया, same thing is written here. In this circuit, uses two diodes, gives output for both the positive and negative half. दो diodes हैं, positive and negative half के लिए हमें supply मिल रही है. Therefore, it is called full wave rectifier. Each side of both the diodes are connected to the two ends of the each side. दो ends में connected है secondary के, and N side is connected together. N side दोनों एक साथ करके लोड के साथ connected है. Output is taken from the common points of diode and midpoint of secondary. Common point of diode ये है और midpoint of secondary से output लेते हैं. And secondary of transformer is provided with the center tapping. All right. So it is called center tap transformer. Suppose the input voltage, हाँ जो अभी मैंने explain किया. Suppose the input voltage to A with respect to center of transformer के center of the secondary के respect में A अगर positive है तो B negative है उस समय देखो. So that's what is written. Suppose the input voltage to A with respect to center tap at any instant is positive. At that instant, voltage at B being out of phase will be negative. दोनों एक दूसरे के out of phase रहेंगे. So diode D1 gets the forward bias and conducts, while D2 is reverse bias and doesn't conduct. When the voltage at A becomes negative, जब A पर negative हो रहा है with respect to center tap, the voltage at B will be positive. Hence D2 will be conducting and D1 will not conduct. Thus we get output during both the positive and negative half of the one cycle. This is more efficient. दोनों से मिल रहा है हमें, more efficient. This is desirable. इसको use करेंगे ना. We should get the supply from both the complete wave. Efficiency is more here. The rectified voltage is in the form of pulses, SSI. Half sinusoidal level. To get steady DC output, capacitor is connected parallel to RL. तो यहाँ पे फिनिश कर देना है आपको. कैपेसिटर का रोल अभी हम देखेंगे. If they are asked how to remove the pulsation, तो कैपेसिटर के बारे में बताना. तो अब तो here you can see. आगे हम देखते हैं how the capacitor. थोड़ा छोटा हो रहा है ना, दो पार्ट में देख लो. चलो up to here you can see. The remaining we'll see along with the capacitors का role. यहाँ तक क्लियर है? बोलिए इसमें एनीथिंग यू वांट टू एक्सप्लेन, यू वांट टू आस्क. डायग्राम में हम लोगों ने पूरा देख लिया था. Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Make the diagram properly and you can write in your own wordings. Close to this you can write.
No problem so far. Okay. So we can see the role of how the pulsation is removed. ये जो आपको दिख रहा है ये ऐसा, we want constant, as we want like this constant this. So capacitor is used to remove this up and down, that is pulsation in the output. All right, can we see further? देखिए आगे. Okay. See. Now, this was the rectifier, and to get the constant output, यहाँ पे क्या लिखा, capacitor is connected in parallel to RL. यहाँ पे देखो ऐसे capacitor connect कर दिया. High value capacitance is connected. So it will initially get charged. यहाँ पे charge हो जाएगा पहले. उसके बाद जैसे supply नीचे जाएगी, it will just send the what is called charges from its own. यहाँ से इसको charge होने के बाद high value capacitance that will have sufficient charges, it will send the supply from its own and will maintain the constant output, and in between it will get charged अगर उसका charge कम हो रहा है तो. So these additional circuit appear to filter out AC ripples. ये जो ripples है, it will filter out and give pure DC voltage. So they are called filters. ये capacitor filter बोल सकते हैं इसको. Called filters. Capacitance of capacitor should be very high so that its discharge rate is slow. Once it gets charged, will maintain constant output DC. ये charge होने के बाद constant output DC को maintain. Discharge rate बहुत कम होता है. It will not get discharged even if it is giving the output, and meanwhile it is connected to panel. It will be getting charged. तो ये in fact charge decay and charge growth वाला टॉपिक है जो डेटा अपने कोर्स में नहीं है. टाइम कांस्टेंट, कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट, सर्किट का CR होता है R into C. If C is very large, time constant will be very large. It will be decaying. It will take lot of time to get discharge. तो high value capacitance use करते हैं उसमें. Filter circuit we can call it, is filtering out this ripples. We want constant output so that the charging of the cell phone can be done properly. It is more efficient and constant output चाहिए. Fast charging होगी, फिर ऐसे डाउन जाएगा तो charging will be slow down. यहाँ पे 0 हो रहा है बार बार, so no charge during that time. So charging may take lot of time. Constant output है, charging of the system will be fast because we use in charger के अंदर है. ये हम लोगों ने डिस्कस किया था. Mobile charger is one of the example of this full wave rectifier. Transformer भी है, it will decrease the voltage. We don't need 220 volt, and we need hardly 10 volt or 5 volt because battery of the cell phone is less than 5 volt. So we will that slightly higher voltage can charge it properly.
तो लेस देन 10 वोल्ट पे ले आएंगे ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होगा? स्टेप डाउन, बिकॉज voltage is to be brought down from 220 volt to the less than 10 volt, and that is to be converted into DC. So rectifier along with the high value capacitance are used. Rectifier means what? Diodes only in combination with the capacitor. So diodes are very small. In fact, जो उसका size है, it is bigger due to what? Due to transformer is connected. अगर ट्रांसफार्मर नहीं होगा, डायोड तो बहुत छोटे होते हैं। तो साइज इज ड्यू टू ट्रांसफर, बिगर साइज इज ड्यू टू ट्रांसफार्मर। चार्जर का जो भी साइज है, नॉट दैट बिग, फिर भी बिकॉज ऑफ ट्रांसफर इट इज स्लाइटली बिगर। डायोड्स आर वेरी वेरी स्मॉल। देखे थे हमने डायोड से छोटे छोटे रहते हैं। ऑलराइट, एंड in full wave rectifier frequency of output is 2 times the frequency of input. जो पल्स की, ये अभी तो कांस्टेंट हो गया, बट ये जो पल्सेशन थी उनकी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे। गॉट इट? तो यू कैन सी होल पार्ट अप टू हियर। कहाँ तक देखा था? एक मिनट, यहाँ से लेकर अप टू हियर, आगे का देखते। दिस मच। कैन यू सी? All right, are you there and no response coming today? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Tomorrow we'll not have the class. Saturday we'll have JE class. All right. Done. Yes. Yes. Okay. देखो, ओके, ये क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। In half wave rectification, what is the output frequency if input frequency is 50 hertz? क्या आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का? So same. So same here. Here. हाफ वेव में सेम। और what is the output frequency of full wave rectifier for the same input frequency? Twice of it. Twice of it. अभी देखा था, ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है, simple question, but textbook problem में you have to remember the answer. Now we can see further diodes. ये कौन से डायोड से? जनरल पर्पस डायोड से। now we see the specific purpose diodes which are designed for certain other jobs. So there are optoelectronic junction devices. Opto means light,
electronic means related to that electricity, है ना? तो ऑप्टिक्स से, दैट इज फोटॉन से, लाइट से जो ऑपरेट होते हैं, उन photons are involved here. Let's see what are those. We learn about the semiconductor diodes in which carriers, that is electrons and holes, are generated by photons. जो electron and hole pairs हैं, they are generated by photons. All these devices are called optoelectronic devices. These are photodiodes, LED light emitting diodes, and solar cells. Three are there. So we are seeing one by one. The first one is the photodiode. First one is photodiode. Photodiode is nothing but a photon detectors used in the optical communication. Optical communication में optical fibers use करते हैं, तो उसमें से जो signals आ रहे कि नहीं आ रहे, that will be detected by photodiodes. It is basically photons are signal detectors used in optical communication. तो optical communication में optical fiber रहेगा ऐसा, उसमें से एक साइड से सिग्नल लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी विल सेंड द सिग्नल, तो इसमें टीआईआर से सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. अदर एंड में ये फोटोन डिटेक्टर का सिग्नल सिंपल ऐसे बनाएंगे उल्टा, इसमें सिग्नल्स ये रिसीव करता है, एरोज आर इंडिकेटिंग सिग्नल्स आर रिसीव्ड. तो फोटोडायोड्स आर द सिग्नल रिसीवर. अगर सफिशिएंट डिस्टेंस के सिग्नल आ रहे हैं तो इसमें इंडिकेशन आएगा कि देयर आर द सिग्नल्स कमिंग ऑफ सफिशिएंट डिस्टेंस. ठीक है, तो they are used in optical communication. It is operated under reverse bias. It is operated under reverse bias. Reverse bias में sensitivity ज़्यादा होती है. We'll see at the end. We'll write the specific answer reverse bias में क्यों use करते हैं. The diode is fabricated with the transparent windows to allow the light to fall on the diode. ये transparent window में रहेगा, light इसमें, light containing the photons will fall here. So transparent window रहेगी यहाँ पर, so that photons should enter inside the region of the depletion layer. तो condition क्या है? Under what condition they are detecting the signal? Condition ये है कि ये जो photons हैं, energy of photon should be greater than energy gap of semiconductor. अगर ये ग्रेट इक्वल नहीं चलेगा, ग्रेटर होनी चाहिए एनर्जी. एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन ईजी. बैंड एनर्जी गैप था, उससे ज्यादा होनी चाहिए. देन ओनली इट कैन पिक अप द सिग्नल, अदरवाइज इट विल से नो, सिग्नल्स आर नॉट बीइंग रिसीव्ड. बिकॉज उससे होगा क्या, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे इसमें, होल्स इधर आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, और जो पहले से रिवर्स बायस में कनेक्टेड था तो उसमें करंट ग्रो हो जाएगा, उसका करंट बढ़ जाएगा. इट विल इंडिकेट द सिग्नल्स आर बीइंग रिसीव्ड, सिग्नल्स ऑफ सफिशिएंट डिस्टेंस आर बीइंग रिसीव्ड, है ना. इस तरह से होल एंड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे. और करंट अगर सपोज पहले इतना फ्लो हो रहा था रिवर्स बायस में, नाउ इट इज इंक्रीजिंग फॉर सर्टेन इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी बढ़ाई तो और बढ़ेगा I2, और इंटेंसिटी सिग्नल की ज्यादा है, ज्यादा फोटॉन्स आ रहे हैं तो ज्यादा करंट बढ़ेगा. इनिशियल विल बी वेरी क्लोज टू जीरो, ऐसा रहेगा. मोमेंट इट गोज अप, इट मींस सिग्नल्स आर सफिशिएंट, डिस्टेंस आर बीइंग रिसीव्ड. ऐसे इंटेंसिटी गोज अप, ये I स्टैंड फॉर इंटेंसिटी.
तो रिवर्स बायस में यूज करते हैं इसको because it is more sensitive. Reverse bias में number of free electrons and hole pairs are very small. और उसमें से थोड़े और बढ़ जाएंगे तो फ्रैक्शनल चेंज विल बी मोर इजी टू पिक अप बिकॉज current is flowing due to the minority carriers. Each extra electron hole pair will be increasing more percentage of that electron and hole. More percentage increase means more reflection will be seen here. कम इलेक्ट्रॉन होल पेयर से भी ज्यादा करंट बिकॉज रिवर्स करंट इज due to the minority carriers, so it is more sensitive in the reverse bias, easy to pick up the signal, है ना. फॉर एग्जाम्पल ओके, पहले लास्ट में देखते हैं उसको रिवर्स बायस का एक्सप्लेनेशन. दिस इज ओके, डायोड इज फैब्रिक, यहाँ तक ओके है. कंडीशन मैंने बता दी आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई मीन एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन द बैंड एनर्जी गैप. दैट इज द कंडीशन टू पिक अप द सिग्नल्स. देन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर, अच्छा जब ये कंडीशन होगी, न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स विल बी जनरेटेड apart from the thermally generated electron hole pair, है ना, and intrinsically generated. तो extra hole pair generate होंगे because of the incoming incident radiation. ठीक है, due to the absorption of photons there will be extra electron hole pairs generated. due to electric field near the junction, यहाँ पे electric field है, so that will push the holes this side, electrons this side. Due to electric field near the junction, electron goes to N side, hole goes to P side, giving rise to the EMF. है ना, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा. External load is connected, current flows. The magnitude of photocurrent depends upon the intensity of incident light. Incident light की intensity पे depend करेंगे. More intensive means more photon means more electron hole pairs. Reverse current will be there. It is easier to observe the change in the current with the change in the light intensity if reverse bias is used. क्योंकि suppose reverse bias से 100 electrons hole pair है और फोटोन से 10 और प्लस हो गए तो 10% ग्रोथ हो जाएगा. बट फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस में ऑलरेडी मेनी इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स है ना, 10,000 है ऑलरेडी. तो 10 इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को पिकअप करना बहुत मुश्किल है बिकॉज इट इज वेरी लेस इन परसेंटेज. सो यू विल नॉट कम टू नो whether the current has gone up or not. So fractional change is more easy to pick up means they have used the word fractional change will be more. यहाँ पे लिख दो since fractional change will be more. ये वर्ड यूज किया उन्होंने. ऑलराइट, और कंडीशन टू डिटेक्ट ऑलरेडी हमने ऊपर लिखी हुई है तो ये यहाँ पे डबल नहीं लिखते. ठीक है, कोई बात नहीं. कंडीशन टू डिटेक्ट द सिग्नल, एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन एनर्जी गैप ईजी. गॉट इट. तो ये पॉइंट आपको लिखने हैं. कैन यू सी ऑल थिंग्स टुगेदर? बोलिए. नो प्रॉब्लम. आर यू देयर और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. कंडीशन ये इसका न्यूमेरिकल भी है, वील सी. एंड क्या है रिवर्स बायस? दे आस्क यू हाउ इट इज यूज्ड, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस. So you have to write correctly reverse bias क्योंकि उसमें fractional change is more in the electron hole pairs, easy to detect the signals in the reverse bias, or in other words sensitivity is more.
ठीक है। डन। ये noted. Now we can see the numerical based on this condition H nu greater than easy. अब ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने बता दिया, फ्रैक्शनल चेंज ड्यू टू द why the current in the forward bias is known to be more. एक मिनट, कैसे sorry, यहाँ पे देखिए, the change in the forward bias is known to be more milliampere, then current in the reverse bias not change. The current in the forward bias is more, that is in milliampere, then the current in the reverse bias, that is in microampere. What is the reason? Then to operate the photodiodes in the reverse bias, I told you already, the fractional change due to the photo effect on the minority carriers dominated reverse bias current is more. Change in the reverse bias is current is more easily measurable than fractional change in the forward bias current. इसमें जो fractional change होगा reverse bias में, that can be detected easily because it is increasing more percentage of current and as compared to in the forward bias. Forward bias में क्या होगा? Already sufficient electrons and all pairs are there. Percentage change in the current will be less. Fractional change will be more. You write this much. Already वहाँ पे लिखा मैंने. Fractional change is more. That's all. As compared to in the forward bias. तो word use करिए ये वाला. What about this question? PN photodiode is fabricated from the semiconductor with the band gap of 2.8 eV. Can it detect the wavelength of 6000 nanometer? कंडीशन क्या, एनर्जी या फोटोन निकाल लीजिए पहले इसकी. If that is more than this band energy gap, then it can detect. अगर एनर्जी कम है wavelength of photon, so it cannot detect. Equal है, then also it cannot detect. All right. एनर्जी कैसे निकालें फोटॉन्स की? Wavelength is given. We can find out the energy of photon. बोलिए फार्मूला. HC by L. HC by L. SC by lambda. Yes. Yes. एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लेते हैं. H न्यू है या HF जो भी लिखना है. न्यू विल बी C by lambda. H की वैल्यू 6.6 into 10 to the power -34. C कितने? 3 into 10 to the power 8. Lambda is 6 into 10 to the power नैनोमीटर में है ना, तो -6 हो जाएगा. एंड ईवी में निकालने के लिए 1.6 into 10 to the power -90. तो ये आपका हो जाएगा 6.6